Sorry for the technical error. Okay, so where we were at Tux Paint, right? So now simply we will just try to understand Tux Paint with the help of a small definition. Okay. So Tux Paint is a drawing program. Okay, it helps us draw and color pictures. Okay. Basically, Tux Paint helps us to draw, color, and paint picture. Okay. What is Tux Paint? So Tux Paint helps us to draw, color, and paint picture. जैसे आप अपनी नोटबुक पे, अपने कॉपी पे क्रेयंस विद हेल्प ऑफ क्रेयंस एंड स्केच एंड वाटर कलर आप ड्राइंग करते हो, राइट? आप क्या करते हो? पेंट करते हो, राइट? लाइकवाइज व्हेन यू वांट टू ड्रॉ और कलर पिक्चर इन अ कंप्यूटर यू यूज Tux Paint. Okay, with the help of Tux Paint, we can draw, color, and paint picture on a computer. Okay. So for that, first you have to open Tux Paint, right? अगर आपको color करना है या फिर draw करना है, तो first thing you have to do is you have to open Tux Paint, right? आपको Tux Paint क्या करना पड़ेगा? खोलना पड़ेगा. ओके, सो डू यू लाइक ड्राइंग? आप लोगों को ड्राइंग करना, पेंट करना पसंद है? सबको पसंद होता है, राइट? ड्रॉ करना, पेंट करना. सो Tux Paint is drawing with a computer. First, now we will learn how to start a Tux Paint. Okay? क्योंकि पेंट करने से पहले या फिर ड्रॉ करने से पहले first thing you have to do is you have to open Tux Paint, right? So we will learn how to open a Tux Paint. Okay? As you can see in your book as well, starting Tux Paint करके वहाँ पे सब heading दिया गया है, right? So first, how you start is on the computer screen we see a penguin picture. Okay? Computer screen पे हमको क्या दिखाई देता है? Penguin picture. Okay, let me show you. Here, you can see in your book as well, right? आपको ये book में भी दिखाई दे रहा है, right? So first, when you will open the Tux Paint, you will see this penguin on the computer screen. Okay, आपको computer screen पे क्या दिखाई देगा? ये penguin दिखाई देगा. Okay, so this penguin is called Tux. ये penguin को ही हम क्या बोलते हैं? Tux. ये penguin को हम क्या बोलते हैं? Tux. Okay, so to open the Tux Paint, we double click on the penguin icon. ये जो icon है, इसको क्या करना है? आपको डबल क्लिक करना है, ठीक है? आपको जब कंप्यूटर ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई देगा? ये पेंगुइन का आइकन दिखाई देगा, ठीक है? So you have to double click this icon to open Tux Paint. Okay, so we know that every app has an icon, right? सब कोई भी ऐप हो उसका क्या होता है? एक आइकन होता है, राइट? एक लोगो होता है जिसकी हेल्प से हमको पता लग जाए कि वो कौन सा ऐप है, राइट? फॉर एग्जाम्पल आप कोई सा भी गेम खेल लो, गेम के भी क्या होता है? फर्स्ट में एक आइकन दिखाई देता है, राइट? सो ये भी क्या है? एक Tux Paint का आइकन है, ठीक है? बिकॉज Tux Paint इज एन ऐप, राइट? Tux Paint क्या है? एक ऐप है. तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो Tux Paint है? विद द हेल्प ऑफ दिस आइकन, ठीक है? एंड ये आइकन किसका है? ये पेंगुइन का है, ठीक है? व्हेनेवर यू सी अ पेंगुइन ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, वो क्या है? Tux Paint है. ओके, एंड व्हेन यू ओपन द Tux Paint क्या होगा? वो स्क्रीन खुल जाएगा
and then you can draw, you can paint, you can color. Okay, so first thing you have to do is double click on the penguin. Okay, first is you have to double click on penguin. कैसे आप टक्स पेन को ओपन करेंगे? टू ओपन टक्स पेन वी डबल क्लिक ऑन द पेंगुइन आइकन. ओके, टू ओपन टक्स पेन वी डबल क्लिक on penguin icon. ठीक है, आपको क्या करना है? इसको दो बार क्या करना है? क्लिक करना है. डबल क्लिक मीन्स दो बार क्लिक करना है. ठीक है, तो जब आप पेंगुइन आइकन को डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा? टच पे खुल जाएगा एंड यू कैन ड्रॉ, यू कैन पेंट. ठीक है, now next is parts of tux window. Parts of tux window. First this was how to start tux paint, right? क्योंकि अगर आपको पेंट करना है तो पहले खोलना तो पड़ेगा, right? Without opening the tux paint you can't color, you can't paint, right? So if you want to draw or color picture at a computer, firstly you have to open tux paint. So this is how you open tux paint. Okay, now tux paint तो खुल गया, अब इसके अंदर क्या है? बहुत सारा टूल्स होता है, राइट? बहुत सारा क्या होता है? पार्ट्स होता है. विद द हेल्प ऑफ दैट आप क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे, राइट? आप ब्रश यूज करेंगे, राइट? आपको अगर लाइन ड्रॉ करना है तो यू यूज दैट टूल, राइट? आपको वो मिटाना है तो यू यूज इरेजर या फिर अनडू टूल, राइट? सो पार्ट्स टक्स पेन के अंदर भी क्या है? ऐसे बहुत सारा पार्ट्स है. नाउ वी विल लर्न पार्ट्स ऑफ टक्स विंडो. ओके, क्या पढ़ेंगे हम? पार्ट्स ऑफ टक्स विंडो. Parts of tux paint or tux window. Okay. Now you can see in your book page number 41 क्या लिखा है? The tux paint window opens. It looks like the picture given below. आपको बुक पे दिखाई दे रहा होगा, राइट? कि वहाँ पे कैसे आप जब आप डबल क्लिक करेंगे तो वो ओपन होके कैसे दिखेगा, राइट? Let me show you. As you can see over here, right? ये आपको आपके बुक में भी दिखाई देगा आपको, राइट? तो ये क्या है? ये आपका टक्स पेंट विंडो. ठीक है, जब आप उसको डबल क्लिक करके टक्स पेंट ओपन करेंगे तो स्क्रीन पे आपको ऐसा दिखाई देता है. ठीक है, ये वाला. नाउ ये साइड में क्या है? सर, these are all tools. Okay, these are all what? These are all tools. Okay, so you can choose whichever one you want. You can choose whichever tools you want. ठीक है, यहाँ पे क्या है? ब्रश है, राइट? आप देख सकते हो आपके बुक में भी ब्रश है, क्या है? स्टैम्प है, राइट? और क्या है? लाइन्स है, शेड्स है, राइट? दिस इज पेन, दिस इज स्टैम्प, दिस इज लाइन, दिस इज शेड, दिस इज टेक्स्ट, राइट? एंड दिस इज लेबल. तो ये क्या है? आपका टक्स टूल. व्हाट आर दीज? दीज आर ऑल टक्स टूल. ओके, दीज आर ऑल क्या है? आपका टक्स टूल. ठीक है, ये क्या है? आपका
और क्या क्या टूल्स है वहाँ पे, अनडू टूल है, इरेजर टूल है, सेव टूल है, राइट। दिस इज योर अनडू टूल। ये कौन सा टूल है आपका, अनडू टूल। अगर बोर्ड पे क्लियर नहीं आ रहा है तो यू कैन ऑल्सो सी इन योर बुक एज वेल, वहाँ पे दिया गया है अनडू टूल, राइट। दिस इज योर अनडू टूल, ओके। दिस इज योर फिल टूल। ये आपका क्या करेगा, कोई भी अगर आप पेंट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप ड्राइंग कर रहे हो, तो उसके अंदर क्या करना है, आपको कलर करना है, तो कौन सा टूल यूज करोगे आप, फिल टूल, ओके। आपको लाइन ड्रॉ करना है वहाँ पे, ठीक है, आपको लाइन ड्रॉ करना है, तो कौन सा टूल यूज करोगे आप, लाइन टूल। ये है आपका लाइन टूल, ओके। दिस इज योर लाइन टूल। लाइन आपका स्ट्रेट लाइन, या राइट, तो ये आपको हेल्प करेगा लाइन ड्रॉ करने में, ओके। वहां पे दूसरा है आपका इरेजर टूल, राइट। दिस इज योर इरेजर टूल। ये कौन सा टूल है आपका, इरेजर टूल, इरेजर टूल, ठीक है। अगर आपका कोई भी मिस्टेक हो गया, ठीक है, आपने वहां पे ड्रॉ करते वक्त आपका मान लीजिए कोई मिस्टेक हो गया, तो आप कौन सा टूल यूज करोगे, यू विल यूज इरेजर टूल, ओके। कौन सा टूल, इरेजर टूल। नेक्स्ट इज आपका सेव टूल भी है वहां पे, आप सब देख सकते हैं, दिस इज योर सेव टूल, दिस इज योर व्हाट, सेव टूल, ठीक है। आपने ड्राइंग कर दिया, यू हैव कंप्लीटेड योर ड्राइंग, राइट। आपने ड्राइंग कंप्लीट करके लास्ट थिंग व्हाट यू विल डू, यू विल सेव, राइट। कंप्यूटर पे कर रहे हो तो यू हैव टू सेव, राइट। इट्स नॉट लाइक यू आर डूइंग कलर्स ऑन अ नोटबुक, राइट, कि आपने कलर कर दिया और इसे बंद करके रख दिया, राइट। अगर आप कलर करके इसे कंप्यूटर को ऑफ करके रख देंगे तो क्या होगा, ये सेव नहीं होगा, ठीक है। तो इसको रखने के लिए क्या है आपको, यू फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज यू हैव टू सेव योर पिक्चर और ड्राइंग, ओके। तो विच टूल विल हेल्प यू टू सेव टूल, ये है आपका सेव टूल, ओके। नाउ देखिए अब ब्रशेस, इस साइड में आपका क्या है, ये सब आपका टूल्स है, ओके। ये सब आपका क्या है, टूल्स। दिस आर ऑल व्हाट, दिस आर ऑल टूल्स, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में आपका क्या होगा, नेक्स्ट पार्ट में है आपका ब्रशेस, these are all what, brushes, okay. Depending on the tool chosen, these options also change, ठीक है। आप कौन सा टूल यूज कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करके आप कोई सा भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप ब्रश चूज कर सकते हैं, ठीक है। कैनवस और ड्राइंग एरिया, यू कैन ड्रॉ इन दिस एरिया, तो आपको ड्रॉ करने के लिए कौन सा एरिया यूज करोगे आप, if you want to draw you use दिस एरिया, ठीक है। कौन सा एरिया यूज करोगे आप, ये एरिया पे आप ड्रॉ करोगे, ठीक है। इतना एरिया पे आप क्या करोगे, ड्रॉ करोगे, ठीक है। आपने यहाँ पे ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया, तो अगर आपको ये ब्रश यूज करना है तो यू कैन यूज दिस, आपका एवरेज शेप से, राइट। यहाँ पे आप टूल से, यहाँ पे स्टैंड से, यहाँ पे लाइन से, टेक्स्ट से, आपको ऊपर में कुछ लिखना है, ओके, ड्राइंग के ऊपर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल यू आर ड्राइंग योर स्कूल, राइट। आप यहाँ पे स्कूल का बिल्डिंग बना रहे हो, यू हैव टू राइट ऊपर क्या लिखा है, माय स्कूल, ओके। विद द हेल्प ऑफ दिस एबीसी टेक्स्ट टूल यू कैन राइट इट डाउन, ठीक है। यू कैन टाइप, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, टाइप कर सकते हो, ठीक है। एंड ड्राइंग करेंगे आप इसके अंदर, दिस इज योर ड्राइंग एरिया, ओके। व्हाट इज दिस, दिस इज योर ड्राइंग एरिया, ओके। This is your drawing area. Now, नीचे आपको दिखाई है, as you can see, I will make it little big for you. Okay. आपको नीचे दिखाई दे रहा है कलर्स, These are all what, ये सब आपका कलर है, यहाँ से आप कोई सा भी कलर क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो, ठीक है। ब्लैक, ग्रे, व्हाइट, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, राइट, these are all colors, ओके। ये आपको कलर्स यहाँ से चूज करना है कि कौन सा कलर आप यूज करोगे, ठीक है। सो ये था आपका पार्ट्स ऑफ टक्स पेंट, ओके। क्या है, पार्ट्स ऑफ टक्स पेंट। तो क्या क्या था इसमें, इट हैज टूल्स like paint, fill, eraser, undo, save, right? And second में क्या था आपका drawing area, right? क्या था आपका drawing area. This is your drawing area. This is
योर ड्राइंग एरिया. ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? कैनवस. ओके, ड्राइंग एरिया और कैनवस और कैनवस. Okay, these are all your tools. These are all tools. These are all tools, tough tools. Okay, and these are all what? These are all brushes. These are all brushes. Okay, and these are all what? These are all colors. क्या है ये सब? कलर्स है. आप टूल यूज कर रहे हो तो आपका टूल सब यहाँ पे है. ठीक है, you want to fill, you want to paint, you want to give shapes, you want to draw a line or you want to erase. ठीक है, सारा टूल्स यहाँ पे है. यहाँ पे सब आपको सबका क्या है? ब्रशेस है. ठीक है, which brush you want to use? आप कौन सा ब्रश यूज करना चाहते हैं? ठीक है, and then here are the color options. आप कौन सा कलर यूज करना चाहते हो ये सब कहाँ दिया गया है? यहाँ पे नीचे दिया गया है. ठीक है, आपके बुक में भी है. राइट, आपके बुक में भी दिया गया है. यस यस एंजल, गुड. These are all what? Parts of tux paint. ठीक है, क्या क्या है? पेंट टूल्स में क्या क्या है? पेंट टूल है, फिल, इरेजर टूल, अनडू टूल, सेव टूल. राइट, एंड वहाँ पे क्या है? व्हाइट एरिया को क्या बोलते हैं? ड्राइंग एरिया. इसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग एरिया. जहाँ पे आप ड्रॉ करोगे और पिक्चर क्या करोगे? ड्रॉ पेन. राइट, ये मिडल पे आप ड्रॉ करेंगे. ठीक है, सो दीज आर ऑल द व्हाट? पार्ट्स ऑफ टक्स पेंट. फर्स्ट वी हैव लर्नड व्हाट इज टक्स पेंट. राइट, टक्स पेंट इज simply used to draw and color pictures in the computer. Right, and then next one, how to start a tux paint. Right, हम tux paint को कैसे स्टार्ट करते हैं? क्योंकि कोई भी चीज अगर आपको ओपन करना है या फिर खेलना है, अगर आप सपोज फॉर एग्जांपल आपको गेम भी खेलना है तो फर्स्ट यू विल डू इज यू विल ओपन दैट गेम. राइट, ओपन करने के लिए आप वो गेम का जो आइकन है या फिर ऐप है उस पर आप क्लिक करोगे तब ओपन होगा, देन यू कैन प्ले. राइट, लाइकवाइज आप टक्स पेंट को पहले क्या करेंगे? यू विल ओपन. राइट, ओपन करने के लिए क्या करोगे आप? फर्स्ट यू विल ओपन द कंप्यूटर. जब आपका कंप्यूटर की स्क्रीन खुल जाएगा तो वहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा? पेंगुइन का आइकन. राइट, यू विल सी पेंगुइन. राइट, उसका आइकन दिखाई देगा. देन यू हैव टू डबल क्लिक दैट आइकन. राइट, यू हैव टू डबल क्लिक एंड व्हेन यू डबल क्लिक दैट आइकन क्या हो जाएगा? ये खुल जाएगा. क्या हो जाएगा? खुल जाएगा. ठीक है, एंड देन नेक्स्ट थिंग इज पार्ट्स ऑफ टक्स पेंट. टक्स पेंट तो खुल गया. ठीक है, खुल गया, बट वहां पे आप कैसे ड्रॉ करोगे? राइट, कैसे यूज करोगे? राइट, कौन सा टूल्स यूज करोगे? लाइक आप लाइन टूल यूज करोगे, आप पेंट करोगे, कलर करोगे, वो सब क्या है? टूल्स है. राइट, तो जब आप स्क्रीन ओपन करोगे तो यू सी दिस, ये इस टाइप का स्क्रीन खुल जाएगा. एंड देन विद द हेल्प ऑफ दिस टूल्स एंड ब्रशेस आप क्या करोगे? कलर पेंट करोगे. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टक्स पेंट. ओके, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर क्लास. Tomorrow we will learn how to open a new file on tux paint. Okay, जो आपने सेव किया है वो तो सेव हुआ, and then next आप न्यू फाइल कैसे ओपन करेंगे? We will learn it tomorrow. Okay, so thank you everyone. Be ready for your next class. स्वागत है आपका हिंदी क्लास में. तो चलिए, आज का विषय है हमारा जेंडर. जेंडर का मतलब क्या होता है? लिंग. ठीक है,
जेंडर का मतलब होता है लिंग, ठीक है। तो आज हम लिंग के बारे में जानेंगे, ठीक है। लिंग किसे कहते हैं? लिंग किसे कहते हैं? स्त्री या पुरुष, स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को लिंग कहते हैं, ठीक है। पहले हम प्रश्न लिखते हैं। लिंग किसे कहते हैं, ठीक है। लिंग किसे कहते हैं, ठीक है। जेंडर, GENDR, जेंडर मतलब होता है लिंग। लिंग किसे कहते हैं? जिससे स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं, ठीक है। लड़का शब्द का पता चलता है और लड़की शब्द का पता चलता है। लड़का शब्द का पता चलता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, और स्त्री शब्द का पता चलता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें हम पहले इसका उत्तर देते हैं। देखिए प्रश्न, लिंग किसे कहते हैं? स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को लिंग कहते हैं, ठीक है। आप लोग नोट कीजिए, लिंग किसे कहते हैं? तो स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जैसे यहाँ पे जैसे लिखेंगे, ठीक है। जैसे लाइट टच किया, फिर से मुझे स्टार्ट करना होगा।
सीता, तो ठीक है, तो राम क्या है? पुरुष है, ठीक है, तो ये क्या हो गया? पुल्लिंग, ठीक है, पुल्लिंग शब्द हो गया। और सीता क्या हो गया? स्त्रीलिंग शब्द, क्योंकि राम करने से क्या पुरुष जाति का, पुरुष जाति को बोध करने वाले शब्द हो गया, ठीक है, और सीता स्त्रीलिंग वाले शब्द हो गया, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे? आप फिर से आप नोट कीजिए। लिंक किसे कहते हैं, ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। हमने तो पहले लिखा था, फिर लाइट कट जाने के बाद ये हमें दोबारा से लिखना पड़ रहा है। हो गया। लिंग किसे कहते हैं? स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? शब्द को लिंग कहते हैं, ठीक है। नोट डाउन कीजिए आप लोग। जैसे क्या हो जाएगा? राम, राम क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। लक्ष्मण, ये सब क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। और सीता, गीता, ये सब क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, ठीक है। जिस शब्द से, देखिए, जिस शब्द से लड़का शब्द होने का बोध कराया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जिस जाति से लड़की शब्द होने का बोध कराया जाता है उसे हम स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको? चलिए, ठीक है। देखिए, हम दो बॉक्स बनाए हैं जिसमें एक साइड हमें क्या लिखना होगा? पुल्लिंग शब्द लिखना होगा और दूसरे साइड हमें स्त्रीलिंग शब्द लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अब देखिए, यहाँ पे क्या है? पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द। हमने यहाँ पे पुल्लिंग शब्द
ठीक है, तो मामी क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दादी लिखा हुआ है, तो दादा लिखा हुआ है, दादा क्या हो गया, पुल्लिंग शब्द हो गया। तो हम इसका स्त्रीलिंग शब्द में क्या लिखेंगे, दादा का दादी। हम लोग इससे पहले विलोम शब्द पढ़े थे, ठीक है। तो विलोम शब्द में क्या होता है, उल्टा होता है ना, मामा का मामी, दादा के दादी। वैसे यहाँ पे करना, तो उसी शब्द को थोड़ा सा हम लोग चेंज कर दिए, पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दादा है, तो दादा क्या हो जाएगा, दादी। अब यहाँ पे देखिए नर, नर का मतलब क्या हो गया, पुल्लिंग शब्द। नर मतलब क्या होता है, नर मतलब मर्द शब्द होता है ना, जो उसको हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग शब्द, उसको नर नर बोला जाता है, ठीक है। तो नर का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा, नारी। नारी का मतलब औरत, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है पति, तो पत्नी का, ये पति क्या हो गया, पुल्लिंग शब्द हो गया, और स्त्रीलिंग शब्द हम क्या लिखेंगे, पत्नी। पत्नी हो गया। अब देखिए ये तो हमारे घर में यूज करने वाले शब्द है, जो कि हम लोग घर में यूज करते हैं। जैसे कि पिता, कितना, जो हमारे हमसे जो बड़े होते हैं, जैसे हमारे पापा ऊपर हैं, वो लोग क्या बोलते हैं, पिताजी बोलते हैं ना, हम लोग पापा बोल रहे हैं। फिर हमारे जो बच्चे, वो लोग आजकल बोल रहे हैं पापा को क्या बोलते हैं, डैडी बोलते हैं। जैसे मेरी खुद बेटी है, वो क्या बोलते हैं, डैडी बोलते हैं अपने पापा को। तो यहाँ पे पिता, तो यहाँ पे माता हो गए, ठीक है। ये सब घर में बोले जाने वाले शब्द है। अब यहाँ पे नाना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नानी। तो कोई भी पूछ सकता है कि नाना पुल्लिंग शब्द है कि स्त्रीलिंग शब्द है, तो हम क्या बोलेंगे, नाना पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। क्योंकि इसमें पुरुष जाति होने का बोध कराया जाता है, इसलिए क्या, ये क्या हो गया, पुल्लिंग शब्द बोलेंगे। और नानी स्त्रीलिंग शब्द का बोध कराया जा रहा है, इससे हम लोग स्त्री शब्द होने का बोध कराया जाता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्त्रीलिंग। तो यहाँ पे नानी क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग शब्द में आ जाएगा। अब मामा, दादा, ये सब क्या होता है, हम लोग घर पे यूज करते हैं, ठीक है। दादा, दादी और नर नारी जो है, जो हमारे जो दादाजी लोग रहते हैं, वो लोग ये सब शब्द यूज, अभी तो हम लोग ये सब शब्द जो है यूज नहीं करते, पहले ये शब्द यूज किया जाता था, नर नारी, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे पति, तो पति के क्या हो जाएगा, पत्नी, ठीक है। अब चलिए, अब हम कुछ अब यहाँ देखिए क्या करना होगा, पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है। पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द, तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा, भाई है, भाई क्या हो गया, भाई का मतलब पुल्लिंग शब्द। तो अब हमको स्त्रीलिंग शब्द भाई का, जो भाई है उसको हम क्या करेंगे, स्त्रीलिंग शब्द में बदलेंगे। तो भाई का क्या हो जाएगा, बहन, क्या हो जाएगा, बहन। बहन मतलब स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बैल लिखा हुआ है, ठीक है। तो बैल, बैल क्या हो गया, पुल्लिंग शब्द। तो बैल का हम स्त्रीलिंग शब्द कैसे चेंज करेंगे,
अब यहाँ पे देखिए घोड़ा है, तो घोड़ा का क्या हो जाएगा? घोड़ी। इसे देखिए, इससे पुल्लिंग शब्द ये है और ये स्त्रीलिंग शब्द। भाई पुल्लिंग शब्द, बहन स्त्रीलिंग शब्द, बैल पुल्लिंग शब्द, गाय स्त्रीलिंग शब्द, मुर्गा पुल्लिंग शब्द, मुर्गी स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है। घोड़ा पुल्लिंग शब्द, घोड़ी स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पुल्लिंग शब्द मोर है, ठीक है। तो मोर का क्या हो जाएगा? मोरनी। मोर का मोरनी। मोरनी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बकरा है, तो बकरा का क्या हो जाएगा? बकरी। बकरी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग शब्द, बकरा का बकरी। बकरा का क्या हो जाएगा? बकरी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए शेर है, तो शेर का क्या हो जाएगा? शेरनी। शेर क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द है और शेरनी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग शब्द। तो इसको हम क्या करेंगे? यहाँ पे शेरनी लिखेंगे। नोट डाउन कीजिए आप लोग तब तक। कमेंट बॉक्स हम चेक करते हैं। आजकल के बच्चे लोग बोलते हैं अपने अपने पापा को डैडी। यस मैम, गुड आफ्टरनून मैम। यस गुड आफ्टरनून। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। इससे क्या हो रहा है? पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द का पता चल रहा है, ठीक है। भाई का बहन, बैल का गाय, मुर्गा का मुर्गी, घोड़ा का घोड़ी, मोर का मोरनी, बकरा का बकरी, शेर का शेरनी, ठीक है। तो आप लोग नोट डाउन कीजिए सब। हम पुल्लिंग शब्द लिखते हैं और आपको स्त्रीलिंग शब्द लिखना होगा, ठीक है। नहीं तो आप क्या कीजिएगा? पुल्लिंग शब्द भी एक साइड लिखना होगा और एक साइड आपको स्त्रीलिंग शब्द लिखना होगा। काका का पुल्लिंग शब्द क्या? काका पुल्लिंग शब्द है, तो काका का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? काकी। नाना का नानी, चाचा का चाची। चाचा क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द। तो एक साइड आप लोग पुल्लिंग शब्द लिखिएगा और एक साइड आपको स्त्रीलिंग शब्द लिखना है, ठीक है। अब इस यहाँ पे देखिए एक बार प्रश्न है, लिंग लिंग किसे कहते हैं, ठीक है। लिंग किसे कहते हैं? स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग कहेंगे, ठीक है। लिंग कहेंगे, ठीक है। स्त्री या
पुल्लिंग शब्द में गोला कीजिए तो आप लोग कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, कितना क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द, इसको क्या करेंगे, गोला करेंगे, ठीक है। पुल्लिंग शब्द हो जाएगा तो इसको क्या करेंगे, गोला करेंगे, ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द, और माता स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है। गाय का बहन, बैल का गाय, मुर्गा का मुर्गी, घोड़ा का घोड़ी, मोर का मोरनी, ठीक है, बकरा का बकरी, शेर का शेरनी। अब आप लोग ये एकदम नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे पुल्लिंग शब्द लिख के लाना होगा और स्त्रीलिंग शब्द 10 पुल्लिंग शब्द लिख कर लाइएगा, ठीक है। ठीक है, 10 पुल्लिंग शब्द लिखना है और 10 स्त्रीलिंग शब्द लिखना है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल, धन्यवाद। अगले विषय के लिए तैयार हो जाइए। Good morning, dear students. Now this is your math class. Be ready with your exercise for me. So, in our previous classes, we were doing what did we study? Let us revise what we studied. The topics of whatever we have studied in math. We have studied addition. We have studied subtraction. Right? We have studied addition and subtraction. So yesterday we did subtraction with carryover method, and on previous classes we have also completed addition. Right? So today we are going to do multiplication. Today we are going to do multiplication. Alright? So this is the sign which denotes the term multiplication. So everyone be ready with your exercise copy, and if you all are attentive to the class, I will ask you few questions when we are doing some exercises. Alright? So we will start with our class. I hope you all are ready with your exercise copy and pencil. I am going to start with the topic. So, for today's topic, we are going to learn multiplication. Right? We are going to learn multiplication. So the sign for multiplication is a cross sign. Alright. So first let us try to understand what multiplication is with the help of a simple definition. So let us understand the term multiplication with this definition. Multiplication is a method
What is multiplication? You all can just note the definition in your copies. What is multiplication? This is the definition of multiplication. So, we will try to understand it with some exercises. Alright. So, what is multiplication? Multiplication is a method of multiplying numbers to find sum or product. Whenever we multiply numbers to find any sum, total or product, that is termed as multiplication. For example, like we have studied in our previous classes, 2 into 2. So, when we multiply 2 by 2, what will we get? We get 4, right? So, this 4 is the sum or product. Alright, by multiplying two numbers we got 4. So this is what multiplication is. We will study multiplication in terms of place value today. We won't be dealing about the simple multiplication, but now we will deal with multiplication in place value method. Alright, so for that, place value we have studied about tens and ones. These are the place value. Alright, so I will give you a quick reminder of place value as well. So if you all know what is place value, you all can give me the answer in the comment section. So we are dealing with place value since so many of our classes. So if any of you have any idea about place value, please give me the answer in the comment box. Let us make this online class also very productive and interactive with one another. So, I will be checking your answers in the comment section. So, tell me what is place value? One sentence, what have we studied about the place value? We have studied about place value, right? We studied about two-digit place value, ones and tens. So, tell me what ones and tens are? So, until you are writing, I will give you a quick reminder of what it actually is. So, on ones place, only single digit number can be kept. As I told you already also, ones place only single digit numbers. Numbers are kept, right? And on tens, what will we do? We divide the number. If we have 10, we will divide the number 0 and 1, because 10 means 1, 10 and 0 ones. Alright? So this is how we studied about place value. So you all tell me what is the place value of 12. How do we write this 12? Tell me the place value of 12. I will be checking your answers in the comment box. Whoever is paying attention to the class, please tell me the place value of 12. What will be the place value of 12? So the question is, first we will understand the place value and only we are going to start with the multiplication. What is the place value of 12? So you can tell me the place value of 12. How do we write this 12 in place value form? We will write it as 1, 10 and 2 ones. 1, 10 and 2 ones. Alright, this is how we will write the place value of double digit number. Since here 1 and 2 are double digit number.
this. So let's just start with some exercises that will make you understand it clearly. So the first question for us will be 3, 7 into 2. So how will we solve this? We will try to understand. Okay. So first let us put the place value of this number. Ones and tens. As I have told you so many times that ones is placed in our right hand side and the tens place value is always in our left hand side. So how will we do the multiplication? First simply we will deal with ones. Alright, we will deal with ones. We will multiply 2 with 7. So 2 times 7 is, how much? You all give me the answer in the comment box. 2 times 7 is, 2 into 7 is how much? You all please answer in the comment box. 2 times 7 is how much? I am waiting for your answers, students. 2 into 7 is? No one is answering. I guess no one is paying attention to the class today. What will be the answer? 2 into 7? It is 14. Right? 2 into 7 is 14. So, how will we do the multiplication? We cannot write 14 over here. Once it is there, 14 लिख सकते हैं? No, we cannot write. Why? Because 1 and 4. Because 1 and 4 are double digit number. Because 1 and 4 it becomes 2 numbers, right? So in one place we cannot write this 14. So what we will do is we will do it on a carry over. How will we solve this question? We will just divide this 14 in terms of place value. So how will we do that? 14 as we all know is 1, 10 and 4 ones. Right? In terms of place value, the 14 is 1, 10 and 4 ones. So how will we take this 14 and do the multiplication? We will just simply 1, 10 and 4 ones. So we will write 4 over here and we will do the carry over. 1 will go up and 4 will be placed in one's place. So 7 twos are 14. So we wrote 14. 1 we put it on the tens place and 2 in one's place. So now we will do the multiplication with 2 and 3. First we multiplied 2 with 7, we got 14. We divided 14 into its place value, and by dividing 14 in terms of place value, what did we got? We got 1, 10 and 4 ones. So 4 ones. We wrote 4 in one's place and in tens place we carried the 1 over here. So now how will we do this? 3 times 2 is? Tell me the answer in the comment box. 3 into 6 is? How much will be the answer of this? 3 twos are 6, right? And we cannot forget this 1. We have to add this one. So 6 plus 1 is 7. So the answer over here will be 7. So by multiplying 32 into 2, we got 72. Sorry, 74. So this is how we do multiplication with place value. Alright. So how did we got this? First
were doing addition and subtraction. So the topic for today's class was multiplication. So we started off with the definition of multiplication. So what is the proper definition of multiplication? Multiplication is the method of multiplying numbers to find sum or product. Whenever we multiply numbers to get any sum or total, it is termed as multiplication. So how did we do that? By simply multiplying two numbers here, we got 4. 2 times 2 is 4. So 4 here is the sum or product we got by multiplying these two numbers. Alright. So after that, what we tried to understand was the term place value. So we are dealing with 2-digit place value, that was ones and tens. So as I told you, in ones place only the single digit number are to be kept. And on tens place, whenever the numbers are in double digit form, we have to break it and divide it in tens and ones place. So how do we do that? How do we divide numbers? As here we had 12. 12. It is a double digit number. Right? 12 is a double digit number. So we broke the number 12 and we made it in place value form like 1, 10 and 2 ones. So we conducted the multiplication with place value. We first dealt with ones place. 2 sevens are 14. But 14 cannot be kept in ones place because it is a double digit number. So we broke the digit 14 and divided it into place value. So 1 and 4 and we did the multiplication 3 and 2. We got 6 and by adding the 1 that we have already carried over we got 74. So 32 into 37 into 2 is 74. So this is how we do the multiplication. So this is end of your math class. We will continue with certain examples or exercises in tomorrow's class. Okay? Thank you. Want to know? Good afternoon, students. So everyone take out your SST book. So we will continue our classes. Everyone take out your SST book and open the page number 140. As yesterday our Kunju ma'am she was taking the class because I have some work. So today I will continue the classes, students. Okay. So before starting the lesson, I will revise your previous lesson. Okay, so as we know that our chapter 14 is going on, right? So yesterday Kunju ma'am she was already teach about star. Okay, so I will write the chapter name here. Chapter chapter name is the earth and the sky. Okay. See, so look at here. So as we know that our chapter 14 is going on and today we are going to discuss about what is clouds. Okay. So before starting the subtopic, so today we are going to discuss about the clouds. आज हम लोग क्या चीज के बारे में पढ़ेंगे? Clouds. So maybe you don't know about the page number. So everyone open the page number 150. Okay, so that we will continue our lesson.
about the star. आप लोग already देख चुके हो कि star क्या है, when we can see the star, okay? So we can see the stars twinkle in the sky at night time. So star हम लोग कब देखते हैं? Night time में जब वो twinkles होते हैं. Meaning of twinkles means shine करते हैं, okay? And some stars are very big, some stars are very small, okay? Sometimes what happen, we think that कि हाँ खास हम लोग भी स्टार को काउंट कर सके, but thing is that we are not able to count the star because in the sky there are so many stars are there and it is very difficult to count, okay? And as most important thing is that ये जानने वाला बात है कि sun is also one big star. sun भी क्या है? एक बड़ा सा स्टार होते हैं, okay? And today we are going to discuss about the clouds. So can anyone tell me what is the meaning of clouds? Clouds किसको बोलते हैं? क्या आप लोग बता सकते हैं? If anyone know the meaning of clouds, please आप लोग comment कीजिए. Okay students, can anyone know the meaning of clouds? Please tell me. आप लोग बोल बता सकते हैं. Okay, so meaning of clouds means बादल. Meaning of clouds means बादल, okay? Okay, meaning of clouds means badal. As we see the clouds in the sky at daytime as well as we can see the clouds in the night time also. Okay students, so clouds हम लोग daytime में भी देखते हैं as well as night sun भी देखते हैं. And clouds have a different color also. We can see the clouds in white in color as well as red in color also. Okay, so I will go through the lessons. We can see the clouds in the sky too. See, so when we can look up, there is the vast space. जो हम लोग बड़ा सा स्पेस देखते हैं, that vast space is called the sky. In the sky there is cloud also. Okay, sky में clouds भी होता है, बड़ा बड़ा fluffy टाइप का होता है, उसको क्या बोलते हैं? Clouds. And it's look very fluffy and soft. वो क्या दिखता है? बहुत soft और fluffy दिखता है. Okay, they are like a fluffy cotton balls. वो क्या जैसे भी दिखता है? Cotton balls की तरह भी दिखता है. क्या तरीका दिखता है? कटन बॉल की तरह. जैसे हम लोग सोचते हैं कि हाँ खास हम लोग उसको हाथ में ले पाए. ओके, देयर कैन बी वेरियस शेप्स एंड साइज. सो हम लोग ये भी नोटिस करते हैं क्लाउड्स डिड नॉट हैव एनी शेप. ओके, इफ यू कैन सी द स्काई, अगर हम लोग स्काई में देखेंगे, इफ वी कैन सी द स्काई, देयर आर नॉट ओनली वन साइडेड ऑफ क्लाउड्स. एक साइड क्लाउड्स नहीं होता है. If we will see the sky, अगर हम लोग स्काई को देखेंगे, आकाश को देखेंगे, we can see कि हाँ there are so many clouds are roaming over there. वहाँ पर बहुत ज़्यादा roaming करते रहते हैं. Not only one side. Some and clouds they did not have a same shape. एक ही shape नहीं होता है. They have a different shape and size. कोई जगह छोटा आता है. For example, see. Wait, okay. See, for example, look at it. Look at it. Okay. See, you just think. Okay, this is the. You just think. This is the sky. What is this? This is the sky. Okay, and आप लोग sky भी देख रहे हो, and we can see the clouds over it. So see, clouds यहाँ भी होते हैं, like that.
दिस इज द क्लाउड। तो बादल होते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्लाउड्स। एंड ये स्काई में ही होते हैं और इसका कोई सेम साइज सब नहीं होता है। एंड इट इज वेरी सॉफ्ट। ये क्या है, इट इज वेरी सॉफ्ट। ये क्या होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। इट्स लुक वेरी सॉफ्ट, ओके। इट लुक very soft and fluffy, soft and okay, it's look very soft and fluffy, मतलब देखने से बहुत सॉफ्ट, नरम और फ्लूफी टाइप का दिखता है। See, sometimes the clouds are dark in color also. Sometimes क्या होता है कि जब बारिश आने वाला रहता है, these clouds are looking very dark in color. जो ये clouds होता है, for example, see, जो ये clouds होता है, sometimes it's look, wait, this minute. Sometime it's look dark in color. ये कैसा दिखता है, बहुत डार्क कलर का दिखता है। दैट टाइम हम लोग क्या फील करते हैं कि हाँ, मे बी रेन विल बी फॉलिंग, कि बारिश होने वाला है, इसीलिए काला बादल क्या हुआ है, घेरा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, these clouds bring the rainfall. So students, you have to keep in your mind when clouds look dark in color, जब ये आप लोग को डार्क कलर से दिखेगा, when clouds look dark in color, you automatically understand कि हाँ, it's maybe these dark clouds bring the rainfall. ये dark clouds क्या ला सकता है, rainfall ला सकता है बोलते हैं। Okay students, now sometimes after a rainfall, when the sun comes out, we can also see the rainfall. So in the rainy season, when rain is falling, okay, so in the rainy season, when the rain is falling, rainy season में जब बारिश होने लगता है, after rainfall के बाद क्या होता है, rainbow show होता है। We can see the rainbow also after the rainfall. So rainfall के बाद, after rainfall, we can see the rainbow also. So rainbow कब होता है, मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, rainbow तब होता है जब एक काला बादल से, see look at this, for example, this is clouds, okay, and when rain is, or this is dark, D-A-R-K-C-L-O-U-D-S cloud, ये पूरा डार्क क्लाउड है। when rain is falling, बारिश हो रहा है आपका, when rain is falling like that, rain is falling like that. So after the rainfall के बाद क्या होता है, ऑटोमेटिकली स्काई विल बी क्लियर, स्काई क्या हो जाता है, साफ हो जाता है, एंड वी कैन सी द रेनबो। So इसके बाद क्या होता है, after rainfall we can see the rainbow. Okay students, I hope you all understand. So see, now we will solve on filling the blanks, so that either you all are understand or not. If anyone have any problem, please comment me. किसी को भी कोई प्रॉब्लम है जो समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, so that I will clear you. So now we will solve on filling the blanks. एक filling the blanks हम लोग solve करते हैं. So I will check you that either you all are understand or not. Okay. So look at it. Fill in the
in the legs. Okay. So number 1. Can anyone know the answer? Please comment here. Okay. We can see many dash in the sky. Number 2 is the sky look different in day and dash. Okay. Next one is the dash is also a star. 4. The dash brings rain. So, students, you will try to answer this. Question. Okay, so number 1 is we can see the many dash in the sky. We can see the many dash in the night sky. Wait, okay. In the night sky. Okay, students. Number 1 question is we can see the many dash in the night sky. So students, can anyone know the answer? Please comment here. किसी को पता है तो बोले yes students, there is a network problem. Yes. So ma'am. Okay. So we can very good. Oh no. Okay, very good answer. So answer of question number 1 is we can see many stars as stars in the night sky. So now I will read the question number 2. The sky look different in day and dash. The sky look different in day and dash. Sky different दिखता है day और कब? What is the answer? Okay, answer up. So answer, the sky look different in day and night. Day and night. Very good answers. Answer of question number 2 is night. Okay. 3rd one. The dash is also a star. The dash is also a star. So answer of question number 3 is sun. So sun भी क्या है? एक स्टार ही है. Question number 4. The dash bring the rain. So answer is cloud. C-L-O-U-D-S, cloud. So in this way, this word is completed filling the blanks. Okay. I hope you all are understand. Okay. Now I will revise today's lessons one more time. Look at here. Okay. Okay, students. Today we already discussed about the clouds. So cloud is a fluffy and soft things which we can see the sky. And clouds, they did not have any shape. उसका कोई shape नहीं होता है. वो बहुत soft और fluffy होता है. वो different in shape and size में होता है.
sometimes we can notice that cloud is white in color, and sometimes we can notice that cloud is dark in color. Okay, so when the that cloud, जो ये clouds होता है, when it's look dark in color, so that time you can automatically try to understand कि हाँ maybe rain will be come. Okay, see here, as I already give the example over here. Sometimes it's look dark in color also, and if that cloud it's look dark, you automatically understand it means कि we can see the rainbow. जब वो clouds dark दिखेगा तो rainfall का संभावना हो सकता है, and when rainfall is over, then we can see the rainbow, because after the rainbow the sky will be see the clear. In this way rainbow will be come or form. Okay, so for example, look at there is dark clouds. When the dark clouds are there, automatically rain will be fall. So after the rainfall we can see the rainbow. Okay students, and after finishing this we will solve one filling the blanks. And as I already clear you, number one question is we can see the many gas in the night sky. So at night sky we can see the star. Okay, second one is the sky look different in the day and night. So as हम लोग को पता है the sky looks different at day and night. Okay, third one is the dash is also a star. It means the sun is also a star. And last one is dark clouds bring the rain. So जो dark clouds होता है वो rain लाता है. So in this way students, for today's class this much only. I hope you all understand. If anyone have any question when the classes resume, I will try to clear you. Okay students, and your homework is, आप लोग का homework क्या है कि go through the lesson. आप लोग एक बार वो lesson को फिर से read करोगे. If आप लोग को problem होगा आप लोग मुझे directly contact कर सकते हो. Thank you. Now be ready for your English class. Ankita ma'am will be taking your English class. Okay, thank you students. Have a great day ahead. Good afternoon everyone. So this is your English class. All of you ready to study new lesson, new things, right? As well as with your copy also, okay? Let's wait a few minutes to join the another students, okay? Let's share the link to a friend and call them here. The class is just going on. Okay, let's give use reply who were present in the class. Okay, let's give me a reply who were present in the class. Is Joe will be present in class में? Give a quick reply. Good afternoon, Pratyaksha. Okay. Yes, good afternoon, Sahin. Good afternoon. Yes. Okay. So, let's start the class, okay? Without being late. जो कोई भी जुड़ रहा है मुझे कमेंट करते रहना, ओके? यहाँ पे जो कोई भी प्रेजेंट है
फर्स्ट क्विक रिप्लाई देना है. ओके, रिप्लाई देना है सब लोग जो कोई भी प्रेजेंट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. टुडे वी आर on the topic that is from chapter 11, right? Chapter 11. Chapter 11, that is from is and are plus ing words, right? Okay, good afternoon. So let's start. Okay, here we are on the topic that is mr plus ing verb, right? So without being delayed, I will write here is okay. Okay. So let's start. Okay. So yesterday I told you how to make sentence, right? How to make sentence, and in the sentence, in what person says, okay, in what point of view we use is, right, and am, are, right. If there is singular noun, okay, if there is singular noun, यदि वहाँ पे यदि singular noun है, okay, at that time we use is, right. जैसे कि आप कैसे बुक में तो मेरे बस इतना का अभी पढ़ा रहे हो, okay. So
कोई एनिमल्स को दिखाना हो तो हम क्या करेंगे, इट का यूज करेंगे, राइट। सो इट इज, आई विल राइट हियर, इट इज अ बिग ट्री। ये बड़ा सा पेड़ है, राइट। ट्री क्या है, ट्री एक क्या है, हमारे नेचर है, राइट। नेचर को हम क्या करेंगे, इट से डिनोट करेंगे, सो इट इज अ बिग ट्री, ओके। सो हम इट लगाएंगे, जैसे कि इट यहाँ पे आया है, इट से यहाँ आया तुरंत, देखिए इट जो है हमारा सिंगुलर है, ओके। हमारे हेल्पिंग वर्ब जो सिंगुलर जो है, हमें इट इसके जब हम क्या लगाएंगे, इसके बाद ये शब्द के बाद हम इस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे और होता है, ओके, जैसे कि कोई भी सिंगुलर नाउन हो, ओके, सिंगुलर नाउन जैसे कि मियां की तनु यहाँ पे, ओके, इफ देयर इज सिंगुलर नाउन, नॉट ओनली ही शी इट में लगते हैं, सिंगुलर नाउन में भी लगते हैं, ओके। जितने भी सिंगुलर नाउन होते हैं, राइट। सिंगुलर नाउन मतलब नाउन का मतलब क्या होता है, जैसे कि राम, ओके। जैसे कि राम के जगह मैंने ये लिखा था, जैसे कि गॉड में प्रिया, राइट। प्रिया के जगह मैंने ये शी लिखा था, ओके। सो यहाँ जो राम है, जैसे सिंगुलर ये अकेला है, प्रिया अकेला है, तो एट दैट टाइम भी हम क्या लगाएंगे, जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर नाउन हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, इज, ओके। कौन सा एडजेक्टिव को इज का यूज करेंगे, ओके। राम इज, और यू कैन राइट गुड बॉय, राम इज अ हेल्दी बॉय, राम इज अ इंटेलिजेंट बॉय, ओके। जैसे कि प्रिया is a beautiful girl, Priya is an intelligent girl, right? So हम ऐसे लिखेंगे, okay? I, aim में क्या होता है? Examples, okay? Examples. So I देखिए, अब I किसमें चित्र है? N, right? I is a मात्र ऐसा सब्जेक्ट है, और ऐसा मतलब एम ऐसा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, ओनली आई के साथ यूज जुड़ता है, किसी के साथ नहीं जाता है, बस आई एम के साथ जाता है, ओके, राइट। आई एम, यू कैन राइट आई एम 8 years old, आई एम अ गर्ल, राइट। कोई भी कुछ भी लिख सकते हो, आई एम 8 years old, आई एम अ बॉय, ओके। आई एम अ गर्ल, ओके, आई एम अ गर्ल, ओके। सो नेक्स्ट मूव टू द आर, ओके। जैसे कि आर देखिए, और आर, जैसे कि आर में यू, ओके, यू, वी, दे एंड और एक है, जैसे कि मैंने क्या बोला था, आर प्लूरल के लिए होता है, राइट। प्लूरल के लिए एक से ज्यादा, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लूरल नाउन। जितने भी प्लूरल नाउन है, एक से ज्यादा जितने भी नाउन है, क्या करेंगे, उसके लिए भी यूज होने वाला कौन है, हमारे यूज होने वाला आर है, ओके, राइट। लुक एट द एग्जांपल्स, ओके। जैसे कि ओके, जैसे कि एग्जांपल यू का, ओके, कि मैंने यू लिखा, यू के बाद यू एंड तुम में वी डोंट नो हाउ मेनी पीपल्स आर तुम, राइट। कितना पीपल्स है, तुम कितना पीपल हो नहीं पता होता, ठीक है। इसमें सिंगुलर भी जाता है एज वेल एज प्लूरल भी जाता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, ओके। सो क्या करेंगे इसमें, यू आर smart girl, okay? You are a smart girl, okay? मैंने बोला तुम्हें क्या हो, smart girl, okay? तुम्हें क्या हो, smart girl, okay? So okay,
दे, मैं बोलूंगी दे आर डांसिंग, दे आर वे लोग डांस कर रहे हैं। ओके, सो हम क्या करेंगे, अब इसमें भी दे जब आते हैं, दे प्लूरल है, एक से ज्यादा है, तो हम क्या लगाएंगे, आर ही यूज करेंगे। ये हेल्पिंग वर्ब हमारी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आर यूज करेंगे। नेक्स्ट प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन का मतलब जैसे कि एक से ज्यादा नाउन, राइट, एक से ज्यादा इंसान। ओके, जैसे कि मैंने लिखा, ओके, lion and tiger are well known. Okay, lion और tiger कौन सा एनिमल है, जंगली जानवर। ओके, जंगली जानवर। देखिए, how many animals are there? There are two animals. Okay, and more than one animals. Okay, जब more than एक से ज्यादा हो, कोई भी नाउन प्लूरल नाउन हो, सब्जेक्ट में प्लूरल नाउन हो, तो इसके लिए प्लूरल हमारे हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है, आर। अंडरस्टैंड? समझ में आई बात? आर, जैसे कि यहाँ पे दे है, एक से ज्यादा है, आर का यूज किया, वी है, आर का यूज किया, एक से ज्यादा यू है तो आर का यूज किया। ओके, ऐसे जैसे कि हमने यहाँ पे सिंगुलर है, ही इज सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए सिंगुलर वर्ब। ओके, शी सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए सिंगुलर वर्ब, इट सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए सिंगुलर वर्ब, राम सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब, वी आल्सो सिंगुलर के लिए सिंगुलर वर्ब। अंडरस्टैंड? समझ में आया? सिंगुलर के लिए सिंगुलर, प्लूरल के लिए प्लूरल। और आई ऐसा मतलब ऐसा है जो एम लेता है, मैं जब मेरे बारे में जिक्र होता है तो एम आ जाता है, और एम जैसा ऐसा वर्ब है जो आई लेता है। ओके, आई सब्जेक्ट लेता है। Did you all understand? ये बात समझ में आया सबको? यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? गुड आफ्टरनून प्रतीक्षा, जयस, ये गुड आफ्टरनून। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? Did you understand? Clear? यहाँ तक समझ में आया सबको? ओके, सो अब यहाँ पे अब इस एम आर के साथ क्या ऐड करना है, आई एन जी। ओके, इस एम आर के साथ क्या ऐड करना है, वी हैव टू ऐड आई एन जी। ओके, सो देखिए, जैसे कि मैंने कल सेंटेंस मेकिंग सिखाया था सबको, राइट? कल मैंने सबको सेंटेंस मेकिंग कैसे करना है सिखाए थे। ओके, तो सबको याद होगा सब्जेक्ट, विषय। ओके, विषय में क्या आता है, नाउन आता है या फिर प्रोनाउन आता है, राइट? नाउन आता है, प्रोनाउन, कोई नाम आएगा या फिर नाम की जगह में लगने वाला कोई उसका प्रोनाउन आएगा। कोई वर्ड, लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, वर्ड है, ये दोनों आएगा। इन दोनों में साथ में नहीं आ सकते, दोनों में बस एक ही आएगा। ओके, और लिख दीजिए, और का मतलब दोनों में एक। ओके, दोनों में एक आएगा। देन अब यहाँ पे हमारे इज एम पड़ा है, तो इज एम हमारे कौन सा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। व्हिच वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, राइट? helping verb. Okay, then helping verb के साथ यहाँ पे क्या आएगा, main verb, right? main verb के साथ आएगा main verb। कौन verb है, main verb में कल परसों पर आया था। main verb है हमारा action word, doing words, right? प्लस ing, मेन वर्ब के साथ हमें क्या करना है, वी हैव टू ऐड ing विद इन आवर मेन वर्ब।
हेल्पिंग वर्ब के साथ हमारे क्या होता है, मेन वर्ब यूज करते हैं। मेन वर्ब के साथ ही हमें आईएनजी का यूज किया जाता है। यू ऑल अंडरस्टैंड? यहाँ तक सबको समझ में आया? यदि यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है किसी के पास तो मुझे एकदम यहाँ पे कमेंट में लिखना है, मैम मुझे यहाँ कंफ्यूजन है, मेरे यहाँ पे समझ में नहीं आया, ओके? तो मुझे ये बोलना है। तो इन दिस के हम क्या करेंगे, ये सिंगुलर का सिंगुलर हुआ, ठीक है? प्लूरल का कब बनाएंगे, प्लूरल का हम कल बनाएंगे एक एक करके सेंटेंस, ओके? सो एक बात ये याद रखना है कि इफ जैसे कि मैंने आसानी से यहाँ पे P L A Y प्ले हुआ, ओके? जैसे कि मैंने P L A Y प्ले हुआ, प्ले और इजीली हमने ING ऐड कर दिया, ओके? इफ यहाँ पे लास्ट में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है नॉट हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ओके? जो हमारा मेन वर्ब आई मीन छुपना, ओके? छुपना हाय यदि ई में खत्म हुए हो, यदि कोई भी हमारे मेन वर्ब ई में एंड हुए हो तो हम क्या करेंगे, हाइड का यहाँ पे आईएनजी ऐड नहीं करेंगे, ओके? ये गलत हो जाएगा। तो उसको हम क्या करेंगे, ई मिटा देंगे, ओके? ई नहीं लिखेंगे, ई के जगह में तुरंत हम क्या लिखेंगे, ING, बस ई को हटाएंगे, ओके? समझो कि ई को हटाएंगे। राम इज हाइडिंग, राम शिप्रा, अंडरस्टैंड? So in this way हमारे सेंटेंस बनते हैं, okay? So your homework will be from page number 54, okay? Page number 54, okay? Page number 54, that is from question number A. I hope you all are doing question number A already, okay? B, okay? B. Question number A, B from page number 55. Question number C and last one is very easy. एकदम सब आसान है, very easy है। D में question number D में you have to बस ING, okay? You have to बस ING ऐड करना है। Sing का हुआ तो sing का you have to add SING. Then after that you have to add ING singing, okay? यदि E है तो E, don't write E, okay? We will erase the E and I will write here the ING, okay? Adding the ING. So in this way D को बनाना है, very easy है। तो ये होमवर्क रहेगा, सब लोग अपने कॉपी में कंप्लीट करके रेडी रहना और कल एक्सरसाइज नए एक्सरसाइज की कॉपी के लिए एकदम रेडी रखना। कल हम एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करेंगे, क्या करके इसी से रिलेटेड, इज एम आर प्लस ING से रिलेटेड, ओके? सो लेट्स कम टू द एंड। This much and rest of the portion we will be doing tomorrow, okay? So thank you all everyone and get ready for another class. कौन सा बुक? ये ग्रामर का है बेटा, ग्रामर का, ओके? ये ग्रामर का है। Good evening students. Now we'll start our science class. This is your last class, okay? Now we'll start our class, okay? Okay. So okay, now see. Good afternoon, Jayash. Okay, good afternoon, good evening, Angel.
हमने मोस्टली क्या किया है, सारे चैप्टर्स कंप्लीट है ना. वी आर डूइंग द रिविजन. तो कल हमारा रिविजन हो गया है. ओके, नाउ वी विल लर्न अबाउट वेरी इजी चैप्टर. ओके, दैट इज चैप्टर 9A. इसके बारे में हम लोग थोड़ा रिविजन करेंगे. ठीक है. ओके, वो बुक निकाल के तुम लोग बैठ सकते हो. ओके, नाउ सी पेज नंबर 52. ओके, if you have a book, just keep your book there. ठीक है. ओके, नाउ A. We all know about it. Air है ना. Air is everywhere around us है ना. But we cannot see it. Air is everywhere. Okay. Air is everywhere. Okay. In classrooms, inside your room, inside your house, outside, everywhere we feel the air. Air को हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं. We cannot see it, right? We cannot see air, but we can feel it, है ना. सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. अभी ठंडा हवा चल रहा है ना. हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमारे स्किन में महसूस हो रहा है हमें कि ठंडा हवा चल रहा है ना. या फिर गर्म, थोड़ा ज़्यादा ठंडा नहीं है. कैसे पता चलता है, बिकॉज वी आर फीलिंग इट. ओके, अंडरस्टूड. नाउ सी, वी कैन नॉट सी इट बट वी कैन फील इट व्हेन इट मूव्स और पुशेस अगेंस्ट अस. हमारे से मूव होता है या हमें थोड़ा सा कभी कभी पुश भी करता है ना. सो इन दैट वे एन एयर इज कलरलेस है ना. कलरलेस मतलब इट हैज नो कलर. ओके, इट हैज नो कलर. ओके, एयर इज colorless. Colorless means which has no color. Okay. No color. Okay. जिसका कुछ कलर नहीं होता. हवा का कोई कलर नहीं होता है ना. It is everywhere. We cannot see it, but we can feel it. Okay. Now, in what way? अब हम जानेंगे in what way the air can help us. Okay. In what way air can help us. Okay. अब हमें कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें एयर हेल्प करता है ना. सो द फर्स्ट वन इज एयर हेल्प अस टू ब्रीथ. ओके, द फर्स्ट वन इज व्हाट, air help us to breathe. Air help us to breathe. Okay. Air हमें सांस लेने में मदद करता है. ऑक्सीजन है ना. ऑक्सीजन इट इज अ एयर. अगर वो नहीं होगा तो हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे है ना. So air is very very important. We need air to live. Not only us, all the living plants, animals need air to live. We need air to live, है ना. Air to live. All living things, है ना, need air to live. चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे प्लांट्स हो, है ना, उन सबको क्या चाहिए, दे नीड एयर, राइट. सो विदाउट एयर वी कैन नॉट लिव, है ना. जैसे विदाउट वाटर, जैसे विदाउट सन, वैसे ही विदाउट एयर ऑल्सो वी कैन नॉट लिव. ओके, वी कैन नॉट ब्रीथ. अब एयर दूसरा हेल्प क्या करता है,
just no need to write in copy. Okay, just तुम देखो. Okay, just understand it. Okay, if you want to write, then write in a rough copy. Okay, you will understand it. ठीक है? And now next is okay. Now next is number 3 is air fills empty spaces. है ना? खाली जगह में फिल होता है. फॉर एग्जाम्पल क्या है? एक बैग हो गया. एग्जाम्पल, अगर बैग खाली है तो उसमें क्या होगा? एयर होगा. नो वी कैन नॉट सी इट बट एयर इज स्टिल प्रेजेंट देयर. है ना? द नेक्स्ट इज द बकेट, बलून. है ना? ओके, बलून को वो एक्टिविटी भी है बुक में. इफ वी stretch the balloon and blow it, the air will fill the space inside them. है ना? वो एयर की वजह से उसका साइज क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है. बिकॉज ऑफ द एयर, बिकॉज वी आर पुटिंग द एयर इनसाइड द बलून. है ना? तो एयर फिल्स द एम्प्टी स्पेसेस, खाली स्पेसेस को भरता है, खाली जगह को. ओके, नाउ और ये हो गया. है ना? और क्या क्या है? For example, we can see क्या है? साइकिल टायर्स हो गए. है ना? बॉल्स हो गए. फुटबॉल, स्पेशली फुटबॉल. है ना? फुटबॉल में फुटबॉल क्या है? अंदर क्या है? एयर ही तो है. हम पंप लगा के क्या लगा रहे हैं? एयर ही लगा रहे हैं. टायर्स में हम क्या? हवा ही भर रहे हैं. है ना? साइकिल के टायर्स में हम लोग क्या लगा रहे हैं? हवा ही लगा रहे हैं. है ना? जब भी कोई गाड़ी पंक्चर होता है तो क्या निकलता है? हवा निकलता है. पंक्चर मतलब क्या? टायर से हवा निकलना. है ना? तो बिल्कुल वैसे एयर फिल्स एम्प्टी स्पेसेस, जैसे बैग्स, बकेट, बलून्स, साइकिल टायर्स, फुटबॉल, एक्सेट्रा. ओके, अंडरस्टूड? सो in these ways, okay, air help us. Okay, है ना? Now they also help the plants. They help the plant. Now how they help the plants? Plants need air to make food. है ना? Plants को क्या चाहिए? Air तो चाहिए. They need sunlight, water and air. ये तीन चीजें होना important है. अगर उन तीनों में से if one is also absent, तो it cannot make food. अगर plants खाना नहीं बनाएंगे तो हम भूखे रह जाएंगे. Okay? तो plants को air भी उतना ही important है. जैसे हम सांस ले रहे हैं, उनको भी सांस लेना है ना? जैसे हम लोग ब्रीद इन, वी ब्रीद आउट, वैसे ही प्लांट्स भी करते हैं. ओके, बट हमें नजर नहीं आता क्योंकि वो लोग हमारे से बहुत डिफरेंट है. प्लांट्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस. वो सब सेम होता है लेकिन क्या होता है? जस्ट दे कैनॉट मूव. है ना? हमारा शेप डिफरेंट होता है. जैसे एनिमल्स डिफरेंट है, प्लांट्स डिफरेंट है. वो लोग सांस डिफरेंट लेते हैं, मतलब वो लोग सांस लेते हैं हमारी तरह, लेकिन हमारी तरह ऐसे बात नहीं करते हैं ना, मूव नहीं करते. बट दैट डजंट मीन कि वो लिविंग थिंग नहीं है. वो भी लिविंग थिंग है बिकॉज इट इज ब्रीदिंग जस्ट लाइक अस. है ना? उन्हें भी एयर चाहिए. राइट? तो एयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इवन अ छोटा चींटी ऑल्सो इट इज breathing because we all need air. Okay, good evening Pratyaksha. Okay, you are also there. Okay, now all these things they have the air inside them. है ना? Now we will move on to next. विंड. है ना? अब विंड का मतलब क्या है? मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. ओके, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. है ना? ओके, वी ऑल नो. है ना? मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. अगर हवा मूव हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं. एंड अ स्लो विंड इज व्हाट डू वी कॉल? अ स्लो विंड इज कॉल्ड ब्रीज. ओके,
सपोज आप लोग पार्क में गए, ओके, सपोज आप पार्क में जाते हो, यू फील फ्रेश एयर कमिंग, धीरे धीरे फ्रेश एयर आ रहा है, तो दैट इज ब्रीज, ओके। लेकिन बहुत तेज हवा चल रहा है, देन दैट इज विंड। और बहुत ही ज़्यादा बारिश और बहुत ही ज़्यादा पेड़ उखाड़ने वाला हवा आ रहा है, वो उसको विंड नहीं बोलते, उसको बोलते हैं स्टॉर्म, ओके। बहुत तेज है ना, बारिश के साथ बहुत तेज हवा लगता है ना, कभी कभार गाड़ियाँ उड़ा देता है, पेड़ उड़ा देता है, ओके, दैट इज स्टॉर्म। लेकिन विंड मतलब धीरे धीरे जो हवा चलता है, ओके, उसको ब्रीज बोलते हैं। थोड़ा मूविंग एयर, इट इज कॉल्ड द विंड, ओके। है ना, देन सी दैट एक्टिविटी देयर, है ना। फर्स्ट क्या करना है, वी हैव टू ऑन, ओके, ये एक्टिविटी में फर्स्ट क्या हो रहा है, टेक अ बलून एंड ब्लो एयर इनटू इट। फर्स्ट वी हैव टू टेक अ बलून, ओके, एंड blow air into it, okay. You have to take a balloon, okay, suppose this is the balloon, okay, you have to blow the air, okay. उसको तुम लोग मुंह से फुला के blow करना है, okay. Now bring the balloon close to your face. जैसे ही तुम लोग बड़ा बनाओ उसको you bring close to your face, उसके एंड को पकड़ो जहाँ पे तुमने फुलाया है, उसके एक निचले हिस्से को, इस हिस्से को तुम लोगों को टाइटली पकड़ना है ताकि हवा अंदर से ना जाए, है ना। तो क्या करना है, उसको रखना है धीरे से अपने फेस पे सामने लाना है ना। ब्रिंग द बलून क्लोज टू योर फेस, ओके। नाउ ब्रिंग द बलून close to your face, है ना। Bring the balloon close to your face. Now make sure the mouth of the balloon is turned towards you. और ये वाला जो है ये तुम्हारे फेस के इस पे टर्न होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, ओके। Now let go of the neck of the balloon. जैसे ही तुम वो लाओगे उसको छोड़ देना है। Now you let go. उसके नेक को, ये वाले हिस्से को, ओके, ये वाले हिस्से को अपने फेस की तरफ लाना है, अब उसको धीरे से छोड़ना है। क्या होगा, now you when you let go of the balloon, when you let go of the balloon, क्या होता है, you feel क्या हो रहा है, हवा आएगा, है ना। आवाज जैसे जाएगा बलून नीचे, हवा तुम्हारे मुंह पे, तो इसका क्या हो रहा है, इस एक्टिविटी का मकसद क्या है कि एयर होता है, यू आर फीलिंग द एयर, यू ऑलमोस्ट फील द, यू फील द एयर, है ना। वो एयर तुम्हारे फेस पे आया, ओके। एयर इज कलरलेस, एयर इज कलरलेस, वी कैन नॉट सी बट वी आर फीलिंग इट, ओके। सो दिस वाज द एक्टिविटी टू शो दैट that air is present but it is colorless, okay. ठीक है, now see people, animals and plants need air to breathe, है ना। You can feel the air, you breathe out if you put your hands. अगर हम ऐसे करेंगे, है ना, ऐसे अगर हमें ठंडा होता है तो हमारा मोस्ट बेसिक क्या आता है, ऐसे you just cover your हाथ, ऐसे करते हो and you just rub your hands if you feel cold. तो मुंह से अगर हम हाँ भी आवाज़ भी थोड़ा सा ऐसे ब्लो करेंगे तो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, हवा ही आ रहा है ना। तो इस तरह से भी हम लोग फील कर सकते हैं, ओके। ओके, और you can put your hand under your nose if you want to see, अगर तुम लोगों ने मूवीज में भी देखा होगा, है ना, कि अगर इफ द मैन इज जस्ट लाइंग डाउन, ऐसे बैठ रहा है, तो वो कैसे चेक करेगा कि वो जिंदा है या नहीं, सीधा नोज पे, है ना। स्पेशली कैसे करते हैं ना पुलिस सब नोज पे, ओके। तो विल लिटरली माउथ इज, हम लोग माउथ और नोज दोनों से ब्रीथ करते हैं, बट इफ वी आर टॉकिंग देन नोज विल हेल्प अस इन ब्रीदिंग, है ना। अगर हमें सर्दी लगता है तो नाक बंद होता है तो कितना मुश्किल होता है सांस लेने में, है ना। नाक कम्प्लीटली बंद है, हमें कितना प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग यूजुअली नोज से, मेन काम नोज का ब्रीदिंग का ही है ना। स्मेल भी है, ब्रीथ भी
करता है। हम लोग बात कर रहे हैं तब क्या नोज का काम क्या है, इट इज ब्रीदिंग, इट इज टेकिंग इन एंड आउट, ओके, ऑक्सीजन को अंदर ले रहा है, ओके, अंडरस्टूड। हाँ जयेश, यस, इफ यू हैव द बलून तुम लोग ये एक्सपेरिमेंट ट्राई कर सकते हो, ओके, जो भी देख रहे हैं तुम लोग भी ये ट्राई कर सकते हो, इट इज अ वेरी फन एक्टिविटी, ओके। नाउ व्हाट एल्स डू वी नीड एयर फॉर, हमने एयर की नीड क्या क्या है, दूसरा है वी नीड एयर टू बर्न थिंग्स, चीजें जलाने के लिए भी, ठीक है, आग जलाने के लिए भी हमें एयर चाहिए। इफ देयर इज नो प्रेजेंट, सपोज अगर हम मान लें कि अर्थ में एयर ही नहीं है तो वी कैनॉट, हम ब्रीथ भी नहीं कर सकते, वी कैनॉट बर्न थिंग्स ऑल्सो, हम मैच स्टिक से कुछ जला भी नहीं सकते, तो एयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। और एयर क्या करता है, इट हेल्प अस टू ड्राई आवर क्लोथ्स, हमारे कपड़े सूखने में। इफ अभी हम मोस्टली किस पे डिपेंड है, विंटर सीजन में तो ज़्यादा धूप नहीं निकलता, तो मोस्टली हम किस पे डिपेंड होते हैं, एयर पे। अगर हवा लगेगा तो हम लोग कपड़े बाहर सुखाते हैं, आपकी मम्मी या कपड़े बाहर क्यों सुखाते हैं, क्योंकि हवा से भी हमारा कपड़ा सूख जाता है ना। तो एयर कितना इम्पोर्टेंट है ये हमें जानना एकदम ज़रूरी है, ओके, ये हमें एकदम ध्यान रखना है। अगर हवा लग रहा है, अगर हम बाहर कपड़े क्लिप लगा के सुखाएंगे, अगर क्लिप नहीं लगाओ तो कपड़े उड़ जाएंगे, है ना, तो क्लिप लगा के सुखाएंगे तो क्या होगा, उससे हवा से भी हमारा कपड़ा सूख जाता है। सो एयर इज दैट मच इम्पोर्टेंट फॉर अस, ठीक है। नाउ प्लांट्स को भी चाहिए एयर, है ना, तो वी फील एयर इनटू टायर्स, तो हमने इतने सारे एयर के इम्पोर्टेंस जान लिए, है ना। तो यहाँ पे क्या है, एयर हेल्प अस टू ब्रीथ, है ना, वी नीड एयर टू ब्रीथ, ओके। और नंबर 4 में राइट डाउन, एयर हेल्प अस टू बर्न, ठीक है, एयर हेल्प अस टू बर्न थिंग्स, हमें चीजें जलाने के लिए भी मदद करता है, ओके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू जस्ट अंडरस्टैंड, इसको याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट वन इज एयर हेल्प अस टू ब्रीथ, फर्स्ट वन इट हेल्प अस टू ब्रीथ, वेरी इजी, है ना। नंबर 2, एयर हेल्प द बर्ड्स टू फ्लाई, birds, and you can add aeroplanes also, air birds and aeroplanes to fly high in the sky. And number 3, air fills the empty spaces, खाली जगहों को fill करता है, okay. Examples you can write bags, buckets, balloons, cycle tires, footballs, okay. तुम्हारे साइकिल के टायर्स में भी एयर है ना, फुटबॉल में भी हम लोग पंप लगा के क्या हवा ही भर रहे हैं, ओके। तो नंबर 4 इज एयर हेल्प अस टू बर्न थिंग्स, सो देयर आर द थिंग्स दैट एयर हेल्प अस टू डू, ओके। नाउ नेक्स्ट है ना, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, है ना, एंड अ स्लो विंड इज कॉल्ड अ ब्रीज, धीमे धीमे जो हवा चलता है, ओके, इट इज कॉल्ड ब्रीज। और तुम लोग बुक में देखो, boats with sails move with the help of the wind, okay. Okay, इस टाइप का sail, okay. Okay, we have, okay, this is, suppose this is the boat, okay. तेरा हो गया, ओके ओके, दिस इज द बोट, ओके। और ऐसे किसी बोट में ऐसा होता है, सी द बुक आल्सो यू कैन सी, है ना, ऐसा है, एंड देयर इज द सीन लाइक दिस, है ना, तो ये कपड़ा जैसे होते हैं, ओके ओके। तो इस बोट, ये बोट क्या बोलते हैं, ओके। तो बोट विथ सेल्स मूव विद द हेल्प ऑफ विंड। अगर ये रिवर में या फिर सी में, तो इस टाइप का वो बोट देखा होगा जिसमें इतना बड़ा
बड़ा बड़ा कपड़ा लगा होता है ना, हम लोग मूवीज में देखते हैं, है ना। रिवर्स में अगर तुम लोग जाओ रिवर के पास तो इस टाइप के बोर्ड्स भी होते हैं। तो वो क्या कर रहा है, विंड जो है, ओके, विंड हेल्प करता है ये बोर्ड को मूव करने में। जहाँ पे विंड ब्लो हो रहा है वो उसी वक्त वो कपड़ा उसी उससे वैसे खींचते हैं, विंड की वजह से दिस बोर्ड इज मूविंग, वो बोर्ड मूव भी होता है। सिर्फ वो चाकू होता है ना पैडल करने वाला, सिर्फ उससे ही नहीं होता है, ओके। तो दिस स्केल आल्सो हेल्प्स द बोट टू मूव, ओके, understood, okay, these all were the points, okay, that how it help us, okay. Now I'll meet you tomorrow, okay. अभी हम next topic कल करेंगे, okay children, okay, bye bye, have a nice day.